क्यों नहीं थी, वो कहाँ गई? पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी 27 लोगों की जान गई, वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्यों निकाली गई? तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेलियर नहीं है, ये सरकार का फेलियर नहीं है। ये प्लान करके मत करो। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, हमें कुछ पता ही नहीं है। पूरे आर्मी का देश है, उन्हें पता ही नहीं है। चक्के नाकों पर आप हर जगह आपको मिलिट्री दिखेगी, पुलिस दिखेगी, सीआरपीएफ दिखेगी। किस लिए? बॉर्डर पे हैं तो कहां से आए? जहां तक पहुंचे हैं तो वापस कहां गए? जिस तरीके से किया गया रिटेलिएशन नहीं हो सकता है। अगर 7 लाख से 12 लाख के आसपास यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस है, उसके बावजूद उनको ये पता नहीं इंटेलिजेंस फेलियर। 3 टायर सिक्योरिटी रहते हुए भी एक ऐसा लैप्स हुआ, और ये सिक्योरिटी लैप्स है। What happened to our intelligence? Have we failed somewhere? And if we have, why have we failed? इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी है जमा हिंद कश्मीर में, एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौजी है, वो कहाँ है? वहाँ पे गाड़ी नहीं जा रही है, पैदल इंसान जा रहा है। सिक्योरिटी इतनी है कि वहाँ से टेररिस्ट कहाँ से आ गए? वहाँ कहीं ना कहीं इनकी एजेंसी अटैक करवाती है। The questions that the Honorable Deputy Prime Minister has raised, they are being echoed also within from India, because the facts are there for the people to see. Hear them out. ये पुलवामा 2 है। पुलवामा 1 में कोई उत्तर नहीं मिला देशवासियों। ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। पूरी देश की जनता, मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी देश की जनता। देखिए, काफी लोगों को ये नहीं पता है कि पहलगांव कहां है, चंदनवाड़ी कहां है, विष्णु टॉप कहां है, गणेश टॉप कहां है, शेषनाग कहां है, अमरनाथ क्या? आज 3 दिन हो गए हैं, अभी तक एक भी इस्तीफा क्यों नहीं आया, या कोई भी किसी ने भी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लिया? आप क्या सरकार और क्या डिफेंस और क्या आप होम मिनिस्ट्री चला रहे हैं? आपसे अभी तक वो आतंकवादी पकड़े तक नहीं गए हैं। बेवकूफ नहीं है हम लोगों को सब समझ आता है। कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद अटैक हो गए। ये घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहाँ ढूंढते फिरोगे भाई? जो तो आपके बीच में यही घूम रहा हो, या कोई कश्मीर के लोग अपने यहाँ पे घटना करके आबाद होंगे? This is the sister of the naval officer killed in that incident. That for 1.5 hours he kept on bleeding. So they could file, they can do the evaluation within 10 minutes that what happened, and they had filed an FIR against Pakistan. Within minutes, their social media is saying, and their officer is bleeding for 1.5 hours. इसका मतलब ये चुप नहीं है, ये किसी आने वाली चीज की आहट होने वाली है। जैसे एक साइलेंस होता है ना कुछ होने से पहले, कश्मीर भी उसी ट्रिगर करता है। देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं, और भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वीर रस की कविताएं पढ़ना शुरू कर चुके हैं। देश के गृह मंत्री ने अपना इस्तीफा क्यों नहीं लिखा, और प्रधानमंत्री को हमले के तुरंत बाद आतंकियों को धमकाने के लिए बिहार में रैली करने की क्या जरूरत पड़ गई? जम्मू कश्मीर के पहलगाम के निकट स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले बेस्टर्न घाटी में आतंकी हमला हुआ। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की पंक्तियां हैं, सरहद पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। So these questions that we are raising, that we are thinking, that the world is thinking, the most loud voice in fact is coming inside from India. The people who are seeing and watching what's happening. Now if you go to the next slide, is it first time that it's happening? No. There is a litany of using terror incidents for political ends. This is important, that these terror incidents have an objective, a political objective. We saw last time in case of Pulwama that how the terror incident in February was used for a political objective for change of status of Kashmir. And we are seeing now that a terror incident, that an incident that happened in Pahalgam is being used for the purpose of Indus Water Treaty, for distracting the Pakistan's continuous and very hardly fought and won war on the
terrorism, the CT effort of Pakistan, and the efforts, the successful efforts for reviving the economy. And there is a list of these incidents. I'll just give you examples of 2 incidents. If you go on the next slide, so the history speaks for itself, that what happened in the Chatti Singhpura 2000, exactly 25 years ago. ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚ ਆਉਣਾ ਰਫੜਾ ਟੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਕੋਲ ਲੱਗ ਪਏ CID ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸੌਂਦੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਕੌਣ ਚੌਥ ਮੇਲਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਵਨ ਨਾਈਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ चेकिंग के लिए निकल आओ बाहर आओ सारे आओ मेल सारे बाहर आ जाओ वो लाइन अप कर लेते थे पहले उदा ही करते रहे फ्रेंडली लाइन अप उन्होंने कॉन्फिडेंस देता फिर फैसला किया अद्धी दिन आ गए 10 बजे रात निकलो बाहर गुरुद्वारे को लाइन अप करे ताकि भज जाओ पिंड छड़ के तो कोई आर्मी वालों को एक्शन नहीं आया तो कोई वी गेव द फुल रिपोर्ट. We said army was involved. Clinton kicked them out. And due to me, all lives have been lost. I want to know exactly what happened. The other human rights organization, United Nations, sent. And we sent them the report. Kya hoya? They knew. Americans knew. So there was killing the which political reasons basically? No. Only this. That exposed the BJP government and BJP government wanted to tell Clinton J&K की हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना सी ये देखो पाकिस्तान की कर रहे हैं पाकिस्तानी साढ़े सिख लाइन अप करके मारते हैं so basically BJP planted this to impress Clinton to help India against Pakistan तुझे मान नहीं सकते वो तो बाद जब ये रौला पिया फिर अडवाणी ने फिर ऑर्डर दिया कि देखो जल्दी से कुछ करो जिससे कन्विंस हो जाए भी इन्होंने किया था ये वो पकड़ लो किसी को इन्होंने 5 इनोसेंट बंदे कश्मीरी पहाड़ के ऊपर जाके मारते जी they were innocent boys. Are you listening? After a quarter of a century, it's the same playbook being repeated again and again, using incidents like Chatti Singhpura, like Pulwama, for political objectives. If you see, the history also tells us what was actually Pulwama. Please listen carefully to the then governor of the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे ये करेंगे वो करेंगे उसको इलेक्शन के लिए यूज करना चाहते थे कि ये पाकिस्तान ने किया हमारे जवान मारे और अब हम हराएंगे कि अब ये सारा ऑनर्स पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए occupied Jammu and Kashmir. पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे ये करेंगे वो करेंगे उसको इलेक्शन के लिए यूज करना चाहते थे कि ये पाकिस्तान ने किया हमारे जवान मारे और अब हम हराएंगे कि अब ये सारा ऑनर्स पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए मतलब ये एक तरह की. There is another important fact that needs to be considered in the situation that the region is facing today, and that is the phenomenon of the fake encounters using the illegally held Pakistani prisoners in India. We have the reports, we have the information that hundreds of Pakistanis being held by the Indians in different jails and locations are used in fake encounters projected as terrorists and infiltrators. I'll give you just few examples. This boy, Zia Mustafa, he was a minor in October 2013. He was taken in custody while he inadvertently crossed, shot down in a fake encounter on 14th October 2021. Listen to this story as told by his family.
ये जो इंडिया वाले हैं, मैं कहती हूँ इनको तो इनके सीनों में दिल है ही नहीं ना। इनके सीनों में अगर दिल होता ना तो ये कुछ ना करते। इतना अरसा उन्होंने कैद में रख के तो आखिर में जब उनका फैसला होना था तो उन्होंने उनको इनकाउंटर कर दिया और इन्होंने हमें उनकी ना डेड बॉडी दी। पाला भी था वो, मेरे घर में भी नीचे आता था, मामी मामी करता था, इधर ही बाहर ही खेलता था। माँ ने बहुत मुश्किल दिन गुजारे, उनकी आंख नजर भी चली गई थी रो रो के। तो बस जब कोई इधर कोई आता था उनको मिलने के लिए, तो कहते ज़िया मुस्तफ़ा की कोई खबर है नहीं है। हम यही कहते थे कि वो आएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। कहती थी कि मैं देख के मर जाऊं तो फिर कोई अफसोस नहीं है। मेरी वालिदा मोहतरमा उसके इंतज़ार में वो वफात पा गई और इसी तरह से हमारे बड़े भाई, 2 बड़े भाई फौत हुए उसके इंतज़ार में। हमारा वो प्यारा बच्चा वो इस तरह से मार दिया, जेल से बाहर निकाल के ऐसे फर्जी नाम दे के कि उसको पता नहीं कौन सी जंगलात का पता था, उसको क्या पता था। जालिमो तुम्हारे वो जेल में है, जेल से कैसे कोई बंदा राब्ता कर सकता है। I will now give you 2 very recent examples post Pahalgam incident. If you see this slide, there you can see 2 unfortunate Kashmiri. One is Muhammad Farooq and Muhammad Deen. They are both elderly. They were both elderly 50 years ago, 50 years plus. Just few days ago on 24th April, they are residents of Uri, and they were killed in a fake encounter by the Indians. If you see the dead bodies, that the Indians showed that they are infiltrators. The Muhammad Farooq, he is wearing joggers. His clothes are absolutely clean. And what they have put beside, after killing him, beside him is a pistol. Is this the infiltrator where there is infested with regular forces going to take on a regular army, and those security forces wearing joggers and a pistol that they planted along with his body? On the other side, look at the shoes. He's wearing Mukeshan, shining shoes. You kill innocent, you plant evidence on them, and then you call them infiltrators? And what are these village people telling? That are they terrorists? Are they infiltrators? Listen to them. हमारा यहाँ असमिया हो गया है। ये 2 हमारे बुजुर्ग भाई ये सदियों से जा रहे हैं, इनका बाप है यहाँ का रहने वाला है। जो आलोसी के करीब ये गाँव है, कई मालूम बेशी गुम हो जाता है। आलोसी के करीब उनको ढूंढने के लिए ये इंडिया आर्मी ने शहीद कर दिए। वो मार कर कहते हैं कि ये दहशतगर्दी में दहशतगर्द के नहीं है। हमारे 2 भाई इंडियन आर्मी ने इनको शहीद कर दिया है। वो गाँव के ज़ईफ़ उम्र थे, उनकी 50-60 साल उम्र थी, तो उन्होंने रिपोर्ट में डाल दिया कि ये पाकिस्तान के दहशतगर्द थे। दहशतगर्द नहीं थे, वो ज़ईफ़ उम्र थे। एक का नाम मलिक फारूक और दूसरे का नाम निगरदार। ये कोई दहशतगर्दी में नहीं पाए जाते हैं कि अरसा दराज से यहाँ रहते हैं। इंडियन आर्मी ने फायर करके इनको हलाक कर दिया। मेरे 2 भाई अपना माल मवेशी ढूंढने के लिए LOC लाइन के करीब गए तो इंडियन आर्मी वालों ने फायर करके दोनों को शहीद कर दिया। This is what they are trying to fabricate even after post Pahalgam, that the Pakistan is sending infiltrators and terrorists. You kill innocent people yourself. You plant weapons, and then you claim them as infiltrators. You claim them that the Pakistani security forces have sent them. Ask yourself that who is doing state-sponsored terrorism over here. Next example. This is 23rd April, just few days ago, a fake encounter that happened in Kupwara. Please hold your breath and see what they do once they are planting, once they are making their bodies, how they mutilate those bodies. Listen to this. These are soldiers of a professional army, hacking the head of a body of an innocent person and showing that these are the terrorists. This happened on 23rd of April in Kupwara.
And that's why, if you go to the next slide, once you keep on seeing on the Indian media and the so-called evidence that this person has been found and this person has been found, from where are these persons coming? These are these Pakistani citizens, the Kashmiri citizens, who are held in different jails, in different locations. Like that poor boy Zia Mustafa and many other incidents that are on record, who are brought out of the jails, killed in fake encounters, tortured, forced to give confessional statements, posed as terrorists. This is the facts, this is the reality of what's going on behind all these incidents. Next, I would like to say few words and take a few minutes on the state-sponsored, the Indian-sponsored and abetted terrorism in Pakistan. Let's start with what the Indians themselves say about it. Please listen. बलूचिस्तान के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, उसका आदर करते हैं, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का। Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. प्रधानमंत्री जी का लाल किले से बयान अपने आप में पहला है और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बयान को सुनकर। इस फोन में बुक्ति, मरी, मंगल, कौन से सरदार का नंबर चाहिए मुझे बोलो, मैं दूंगा बलोचिस्तान में। अगर हम पाकिस्तान के अंदर उनकी जो इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स हैं, Former Chief of Indian Army talking. हमें वो करना चाहिए। उन्होंने बलूची को दबा के और गुलाम बना के रखे, तो उनको मुक्त करना है। The aims and the targets of RAW to conduct the various terrorist with this Indian serving officer, and any kinds of requirements of them are conveyed back to the RAW officials. बैरून मुमालिक के फंड्स लेकर अपनी ऐश वशरत की जिंदगी गुजार रहे थे, आम मासूम बलोचों को मरवा रहे हैं। इस तमाम साजिशों में खासकर इंडिया का हाथ है। मेरा मुलाकात हमसाया मुल्क हुआ, हम आपको सपोर्ट करेंगे रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तकिम होने के लिए। एक महसूस करते हैं बलोच को सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, या मैं समझता हूँ कि इसका नुकसान सिर्फ बलोच कौम का हो रहा है। दुनिया की नजरें तो हैं इस पे, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। So these were the leaders of multiple terrorist groups operating in Balochistan, who having after surrendered are revealing in detail that how they were funded, they were helped, and how their sponsorship was done by India. In the next slide you can see a terrorist operating and sponsored by India, Aslam Achu in Indian hospital, and an Indian provided passport of Afghanistan office. In next slide, you can see that once the Jafar Express happened, the internationally recognized terrorist organization BLA, his spokesperson, where was he sitting? He was sitting on Indian channels, wearing a mask, coming on multiple Indian channels, and glorification of a terrorist sect, which, by the way, the state of India has not shown any concern or condemned so far. And they are glorifying it, taking its spokesperson over here. बहुत बड़े पैमाने का एक ऑपरेशन है, सैकड़ों यरगमाली है, फिर उसमें फौजी भी है, बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड इसको लीड कर रही है, उसके जो खसूसी दस्ते हैं स्पेशल। This is again very interesting. This footage that the Indian TV channels showed was made by the terrorists once actually the Jafar Express ID was blown. So this was only available with terrorists. And who are the first electronic channels who started showing it? It's the Indian channels. See it. The attack took place at around 1 p.m. when the train passed
through the Bolan Pass. Big news coming in from Pakistan. Baloch army say that more than 100 Pakistani army personnel have been taken hostage. It's a big claim being made by the BLA. 6 soldiers of the Pakistan army have been neutralized. Artificial intelligence images being created. The Pakistani train was hit by Old images which are not related to the incident being used to show that terror incident has been. So this is vehement, clear glorification of terrorism being done in Pakistan. If you move to the next slide, you will find that not long ago, it was Pakistan as repeatedly has been telling this, and this is the evidence that Pakistan put in front in this room on Indian sponsored and abetted terrorism in Pakistan once the transnational killings of Pakistanis was done. Listen to this clip also. We have credible evidence of the links between Indian agents and the assassination of 2 Pakistani nationals on Pakistani soil. These are killings for hire cases. Indian agents use technology and safe havens on foreign soil to commit assassinations in Pakistan. An Indian agent, Yogesh Kumar, orchestrated the assassination. We have documentary, financial and forensic evidence of the involvement of the 2 Indian agents who masterminded these assassinations. And is it only restricted to Pakistan? No, it's not. It's transnational. Listen to what the other parts and the leaders of the other countries are saying. Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. This is something we take very seriously. A number of us have raised this directly with the Indian government. If the BJP administration is actively plotting to kill political opponents in the US and Canada, just imagine what's happening in India itself. So once we say that we have got nothing to do with Pahalgam, and once we say the only way out is an independent, credible, transparent investigation, we have strong reasons, empirical evidence and facts on the basis of which we are saying. Now, see, if you come to the next slide, if you remember that once the National Security Council issued its declaration on 24th April, it clearly said that Indian attempts to inject volatility in the environment along Pakistan's eastern border is aimed at distracting Pakistan's counter-terrorism efforts. And on night 25th, 26th, within 48 to 72 hours, its manifestation was clear. The largest tashkeel of Fitna al-Khawarij terrorists was taken down. 71 were sent to hell. This proxy of the Indians, the largest tashkeel, was launched, and alhamdulillah, the Pakistan security forces and the intelligence agencies, being vigilant, took them down. Because we have credible intelligence that Indians, post-Pahalgam, have tasked all their proxies to undertake terrorist acts everywhere in Pakistan, whether these proxies are operating in Balochistan and along the other parts of Pakistan. One of the clear evidence of these proxies and these cells I presented in detail yesterday. Just to refresh your minds, I am going to request you to listen to just one audio of a serving major of the Indian Army